Good morning guys, welcome to I don't know which day but this is our last day in Goa. We've already checked out and we've kept our luggage. Now we are going to the beach again. आज बच्चे वाटर स्पोर्ट्स करेंगे और मैं बस वेली हूँ, मैं चिल करूँगी. That's my outfit by the way. We're all beige today and 11 बजे और धूप इतनी तेज़ है ना. But yeah, let's go. Okay guys, we are seated. मैं अपना टाल बिछा के बैठ गई हूँ. Because I have some watermelons, I want to just sit in the sun, eat my watermelons and just enjoy the sea view. मैं पहली बार इतनी सुबह आई हूँ ocean के पास and the water looks like blue, like a very unique shade of blue, like teal blue. It's very nice. So I'm just sitting and enjoying the waves. Yeah. Hi guys, change of plans. Now I'm sitting in like a, what do you call this, like a beachside recliner situation. I don't know, like my vocabulary has gone to shit again. But बहुत ज़्यादा धूप थी, so I decided कि इधर शिफ्ट करने. Plus I also have सामान, बच्चे नहाने गए हैं, मतलब water sports करने हैं, तो उनका सब कुछ सामान है मेरे पास, so I cannot like change places with all that stuff. So finally I'm sitting and I've ordered a cold coffee because सुबह से हमने अभी तक breakfast नहीं किया. It's almost 12. We just had watermelon, so now I'm gonna have coffee. I'm so excited. Okay guys, अभी एक दीदी आए थे और उन्होंने बोला कि मसाज करा लो. मैंने kind of said yes, so let's see. Just take my hand. You are so young and you 기다리는 날 모르니. Yeah, I'm ready. One step 달려와줘 like my side. Hey guys, तो अब हम आ गए हैं खाना खाने. बहुत शोर है तो आवाज़ नहीं आएगी, बट खाना खाते हैं. आलू का पराठा. तो खाना खा लिया और बीच पे भी टाइम स्पेंड कर लिया. बच्चों का खूब बीच टाइम हो गया है. So now we are going back. चेकआउट तो हमने कर लिया था. अब हम अपना लगेज लेंगे एंड we'll head towards मडगांव, जहाँ से हमारी ट्रेन है. एंड quite a nice trip to be honest. Hi guys, what's up? और today है मेरा hair color day with my bestie. हम दोनों आज अपना हेयर कलर कराने आए हैं एंड होपफुली अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि कैसा निकलेगा, बट लेट्स सी, लेट्स गो. So let's start. The guy you see behind me is Karan. He's the owner of Curly Palace Salon and currently we are discussing कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मेरी हेयर हेल्थ कैसी है और उसके हिसाब से मुझे क्या सूट करेगा. Like what I want, I had like an idea मुझे क्या चाहिए.
सो सबसे पहले तो आप देख लो मेरे पुराने बाल. दिस इज़ हाउ माई ओल्ड हेयर लुक्स. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग सम सेक्शंस जिसमें हम हाईलाइट्स करेंगे. नाउ सेक्शनिंग की टेक्निक भी बहुत अलग है. हम एक सेक्शन लेंगे और एक सेक्शन छोड़ देंगे. लाइक एक सेक्शन में हाईलाइट्स किए एंड दूसरे में छोड़ दिए. एंड एज यू गाइस कैन सी करण इज़ मेकिंग सम हाईलाइट्स, लाइक नाइस हाईलाइट्स, बैक कोमिंग इट. एंड अब इसके अंदर हम ब्लीच करेंगे अपने बालों को. आई रियली वॉन्टेड बहुत कम लाइक मेरे बालों पे ब्लीच लगे. दैट्स वाई वी वेंट दिस टेक्निक. इसमें हाईलाइट्स हो भी जाएंगे और बहुत सटल भी रहेगा. सो आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस माई हेड लुक्स लाइक दिस, ऑल कवर्ड विद एल्यूमिनियम. सो इसको थोड़ी देर रखा एंड देन इट वॉज टाइम टू वॉश माई हेयर, लाइक डू अ नाइस शैम्पू. पूरे बाल साफ सूफ कर लिए इसमें. एंड इफ़ यू गैस कैन सी स्लाइटली आपको मेरे हाईलाइट्स दिखेंगे जो अभी बिल्कुल ही ऐसे ब्लॉन्ड हो रखे हैं, बट ऑफकोर्स उन पर कलर चढ़ेगा. सो अच्छा सा लाइक आई लव Salon shampoo and like the feeling is amazing, like it's just so relaxing. So now it's time for color and this is Monica जिसके बालों पे लाल रंग लगा है. I am calling her Lalu. So yes, after a long time ये अच्छे से मेरे बालों पे कलर लगा रहे हैं. And I went for like a cool tone brown family situation. कलर करने के बाद अब मेरे बाल धोए जा रहे हैं. Again they are doing a shampoo. काफ़ी ध्यान रखा है इन्होंने मेरे बालों का. एंड दिस इज़ माई बेस्टी. इसके भी लाल हो गए बाल. एंड अब हम करेंगे हमारे बालों पे गुड ओल्ड ब्लो ड्राई. आई लव 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 Salon ब्लो ड्राई, Salon हेयर वॉशेस. एज यू गाइस कैन सी दे आर स्टाइलिंग माई हेयर अप. एंड मैंने ब्लो ड्राई से ही स्ट्रेट कराए थे, मैंने प्रॉपरली स्ट्रेटनर नहीं यूज़ किया. एंड दैट्स हाउ माई हेयर लुक्स इन नेचुरल लाइट. सनलाइट नहीं है ये, नेचुरल लाइट है. सो सटल, सो प्रिटी. एंड इनसाइड लाइट में भी मैं आपको दिखाती हूँ. दैट्स हाउ दे लुक. बहुत ही ज़्यादा सटल लुक है एंड आई लव देम. हाय गाइस, कलर हो गया. टाटा. मोनिका का कलर मेरे से ज़्यादा. एक बार घूम के दिखाएं मैम. शी इज़ अ रेड हेड नाउ एंड आई एम अ ब्रूनेट. सो आई थिंक वी बोथ गॉट द चेंज वी नीडेड. नहीं, इसका अच्छा लग रहा है. कमेंट्स में बताएंगे सब. ज़्यादा ही बोरी नहीं लग रही हूँ इसमें. तो लगनी चाहिए ना. तो उसने तेरे फेस टोन को उठा दिया. वही तो लाइक द हेयर स्टाइलिस्ट कारण उसमें यही बताया था कि मोनिका के फेस को रेड अपलिफ्ट करता है. एंड आई फील लाइक मैंने सेफ ही प्ले करना था बिकॉज आई एम जस्ट डन विद गोइंग एक्स्ट्रा. ये बुग्गे मुबारक. कैसा लग रहा है तुमको? 1000 सब्सक्राइबर्स लगे. नॉर्मल है. बन के हुए हैं पहली बार. चलो, गॉड ब्लेस यू. भगवान जी ब्लेस करेंगे. सच में जल्दी हो जाएंगे. यू जस्ट नीड वायरल शॉट्स. दैट्स इट. अच्छा है. शॉर्ट्स बनाओ फॉलोअर्स के लिए. ये देखो ज्ञान. हाय गाइस, व्हाट्स अप. तो कल हम मिले थे लास्ट जब हम वंशिका के घर पे थे. उसके 1K सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेट किए. कंग्रेचुलेशंस हनी. एंड खाया पिया. Then I came back home. I was super tired and nothing interesting was happening in my life. I have a pretty boring life to be honest. And I wanted to keep this vlog interesting. So मैं अभी जा रही हूँ एक मील बनाने अपने लिए. मैंने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया है. I just had one coffee and क्या खाया था मैंने, और थोड़े से पॉपकॉर्न खाए थे. So now I'm making the first meal of my day. It's 5 p.m. in the evening. Yes. And I'm going to be making rice with this mixed veggies, stir fry veggies, Thai curry. पता नहीं क्या बोल सकते हैं उसको. I don't have a name for that, but it's quite tasty. And I thought कि मैं उसकी रेसिपी दिखा देती हूँ. So let's go and cook. So सबसे पहले we will take a pan, preferably a non-stick pan, और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी and butter. बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे and then we will add chopped, finely chopped garlic. थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देंगे. You know, like let your garlic go golden and then add your veggies. सबसे पहले मैं ब्रोकली और कैरेट्स डाल रही हूँ बिकॉज उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. कोशिश करेंगे कि हमारी जो फ्लेम है वो तेज़ ही रहे. देन आई एम एडिंग माई रेस्ट ऑफ वेजीज विच आर मशरूम, शिमला, onion, corn, and again mix and time for some sauces: pizza pasta sauce, vinegar, soya sauce,
ketchup and some garlic chili spread rib also. ये सब कुछ आप टाइम लैप्स में देख लो, फटाफट डाल दिया मैंने. एंड देन अगेन मिक्स. की इज़ टू कीप द लाइक द फ्लेम हाई ताकि सब्जियां अपना पानी ना छोड़ें. देन आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट टू इट एंड ऑल्सो सम चिली फ्लेक्स टू फ्लेवर द whatever stir fry thingy. And फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी चीज़ी चिपोटले सॉस टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ क्रीमी टेक्सचर. इसीलिए मैं मेयो भी ऐड कर रही हूँ. यू कैन टोटली स्किप इट ऑल्सो. एंड देन अगेन मिक्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध बिकॉज आई ईट इट विद राइस एंड आई लाइक इट टू बी अ लिटिल लाइक थोड़ा वेट हो, थोड़ा ग्रेवी टाइप महसूस हो मुझे. सो दैट्स वाई ऐड मिल्क. इट ऑल्सो एड्स टू दैट क्रीमी टेक्सचर एंड टाइम टू सर्व इट स्टीमिंग हॉट विद सम राइस. सो या दिस इज़ मी सर्विंग. थोड़ा सा मैं आज मास्टर शेफ़ प्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ. सो आई एडेड सम ऑरिगैनो टू इट ऑल्सो, लाइक पिज़्ज़ा ऑरिगैनो. ये मैं लास्ट में डालती हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उससे. एंड या ओके गाइज, सो the pasta, why did I say pasta? So the veggies and the rice are ready, as you guys saw. And I'm not gonna lie, मैंने वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन की है. यूजुअली खाती मैं इसी प्लेट में, बट प्लेट इज़ फ्रॉम PepperFry by the way. And yeah, let's just do a quick taste test. Everything is fine, just मुझे कम चीज़ी फील हो रहे हैं. I can definitely add some mayo to it, but otherwise the flavors and everything on point. It's actually quite healthy to be honest. मैं तो ये बहुत जल्दी बना लेती हूँ. वीडियो शूट करने में थोड़ा टाइम लगे इसलिए लेट हो गया, but usually I make it very quick. Cheers. Hi guys, what's up? So the last time you saw me, I was getting my hair color done and I was at Vanshika's place celebrating 1000 subscribers to her. Did I do anything after that? I'm not sure. Yeah, shit. Okay, so I remember. So the last time you saw me, I was making like that dish chawal and that sabzi thing, and it has been what, 2 days to that, and again nothing exciting was happening. I was just roaming around chilling, doing my work and stuff. Train aa gayi. Hello train. But today was quite happening. Subah I was shooting, as you guys can see I have makeup on, and then I attended this master class. It was regarding the my CA stuff. So that was that, and I was like making notes since the past 2 hours and I'm so tired. And I wanted to also finish this vlog, but before that I thought thoda sa aur interesting banate hain isko. So I ordered a bunch of stuff from PepperFry. So I was like main dikha deti hu. So this is like a PepperFry mini haul. Okay, so the first thing, and I'm so excited about it, is this bottle. So drinking water bottles usually हम plastic की use करते हैं, but this one is a copper water bottle, and you guys can see इसमें इतनी प्यारी ना चिड़िया बनी है, फूल बने हैं, and it has like this beautiful indie print going on. This is from like a homegrown label, and I know copper bottles वैसे भी expensive होती है, like usually ना आप ऐसे वाली इसमें लेते हो जो finishing होती है, and इस पे बहुत जल्दी निशान पड़ सकते हैं. So this one is like quite nice. ट्रेन फिर से आ गई, कितनी ट्रेन आ रही है, oh my god. तो yeah, that I really like this bottle. इसका finish बहुत अच्छा है, and I really like how the it looks very nice. It's like a different piece. People will stop and ask you where did you get this bottle from, because it's quite stunning. And one more thing that I got is this very basic thing कि content creators लेते हैं, but आजकल तो सभी लेते हैं. So I have like this light, ये बहुत बड़ी string light है, खुल जाती है, and इसमें सेल डालने होते हैं. So ये मैंने खुद डाले, इसमें डले डलाए नहीं आते. And you have a button, इसको on करोगे, so this is like ये light ऐसे ना जल जाती है पूरी. Then I got coffee mugs. Ta-da! I have like this such a beautiful coffee mug. ये blush pink color में है, and it's actually quite big. मतलब ऐसे नहीं है, छोटू मोटा सा mug है. This has like this texture going on all over it. So when you even hold it, it feels very nice, और grip भी काफ़ी अच्छी आती है इसमें. तो yeah, I got 2 of these. इसमें मैंने coffee पी थी, literally जूठा है, and ये भी साफ पड़ा हुआ है. So I got these 2 coffee mugs. So next up is this pasta plate. Look at it, it's so beautiful. ये textured नहीं है, it's like plain one, and ऐसे थोड़ा सा इसमें
bowl place bhi diya hua hai. Bowl place like bowl kind of texture, so that you can like put stuff and eat. I have like 2 of these, and I think this set was for rupees 750, which is actually not a bad price. I know आप market में जाओगे locally आपको मिल जाएंगी और सस्ते में, but we live in Chandigarh and हम Delhi में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे नहीं मिलता है ये सब. Apart from that, I got 2 other things. I'm just gonna reach out to them. So I got satin pillow covers. So I don't know why it's looking a little bit green on the camera, but it's like beige golden, and I was very skeptical before ordering them. I thought ki they would not be good quality, and the satin would be like very patla satin, the kind of satin that you get in like cloths and dresses. But no, like the satin is super thick, matlab ye काफी मोटा, and it's like very durable. Like I love the fabric quality, like it's very nice quality, and it's recommended to sleep on like satin pillowcases. They just make sure that your hair is like tangle free, and they're just good for your hair health. So that's why I got 2 of them, and I have been currently using them. And if you're looking for very nice quality satin pillowcases, pillow covers, then definitely check out PepperFry. And I have just one more thing. दूर पड़ी है लेके आए. Tada! I have this cushion cover, which is a macrame cushion cover. So this is how the knit looks like. It has a very nice pattern going all over it. Normal 16 by 16 hai, and the quality is actually pretty nice, pretty sturdy. Like when you touch the material, you know that it's like good quality. The macrame is of really good quality. The knit is very nice, on point, and it's like just in general it's like very good quality kapda or material they have used. So that is that, and I think that sums up my haul. I don't know, this vlog has traveled to places, I'm not even kidding, but I think this is the kind of format that I'm hoping to continue. I'm super tired. I'm gonna go wash my face, relax for a bit, and I'll leave you guys at it. Thank you so much for watching this vlog. If you enjoyed, don't forget to like this video, subscribe to my channel. Let's make it a family of 10k super soon, and I'm gonna see you guys in my next video. Bye bye, ta and namaste.